Hi everyone, welcome back to my channel. It's your girl Simran. So in today's video, I'm going to recreate Janhvi Kapoor's brunch makeup look. So this is what I have done on my face, and if you want to know how I did this makeup look, how I achieved this dewy makeup, then please keep on watching. आप वीडियो को पूरा देखना उसको जानने के लिए. And guys, मैं बहुत दिनों के बाद ना इस वीडियो शूट कर रही हूँ and I missed you a lot and I had some examination, so that's why मैं शूट नहीं कर पाती हूँ थोड़ा सा मुझे माफ कर लेना. But I hope आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, आप जरूर एंजॉय करेंगे ये वीडियो को. सो वीडियो को पूरा देखना. सो दिस वाज हर मेकअप लुक. सो इफ यू वांट टू नो हाउ आई अचीव दिस ब्यूटीफुल डूई मेकअप, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, इफ यू लाइक द कंटेंट एंड द वाइब, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. दैट विल मीन अ लॉट टू मी. एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो. एंड या, विदाउट नो फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so now I'm going to start with my skincare process, that is my skin prepping before doing the makeup. And I can see clearly like she already did her skincare and after that she is doing her makeup because her skin is looking very nice. And also, as you can clearly see, I have some active pimple on my face here and over here as well. So मैं कुछ products अभी use कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छे से मेरे pimples को calm down करने के लिए helpful होते हैं, acne को remove करने के लिए भी helpful होते हैं. So yeah, I'm gonna talk about them. So पहले मैं अपने face को already wash कर चुकी हूँ using this face wash. So this is called the Derma Co 1% salicylic acid gel daily face wash. As the name said, it contained 1% salicylic acid, which is great for your active acne. वो अच्छे से आपके acne को remove करता है. So I like to use this face wash when I have acne on my skin. So then I follow this up using this Derma Co 2% salicylic acid face serum. As the name suggests itself, it contains 2% salicylic acid. This serum is a very nice serum. It helps to remove your active acne and आपके जो skin पे white heads and blackheads होते हैं, आपके pores को भी unclog करता है. And also it prevents skin from damage. So I like to take 2 to 3 drops of this serum. Then I apply it all over my face and neck. It just quickly absorbed into my skin in 2 to 3 seconds. Guys, it can be used in AM and PM, but if you are using it on daytime like the way I'm using, so you have to use a good sunscreen. And so for that I have this sunscreen with me. This is called the Derma Co 1% hyaluronic acid sunscreen aqua gel. Comes with SPF 50 PA4+, which is great guys. And you guys already know how much I love this sunscreen. I have already recommended it so many times in my videos. It gets absorbed so quickly and doesn't leave any white cast. The combination of hyaluronic acid and vitamin A helps to fight against the sun damage while reducing the fine lines and make the skin feel so soft. So overall it's a great product, and practice is very necessary for all these products that I have shown in today's video. If you want to buy any of this product, you can check my description box below, and also you can use my coupon code, that is Dwivedy 2023, to get extra 20% off on their website, which is the Derma Co's official website. These products are also available on Amazon, Flipkart and Nykaa as well, but the coupon code is only works on Derma Co's website. And also every time you shop any product from Derma Co, they will link your order to a child that they are helping to educate along with Bhumi. These all products are fragrance free, so you can definitely check out my description box below to buy any of these products. So guys, our skin prepping is done. So now I'm going to move for the makeup, and I have all the product that I'm going to use in today's video here as well. So I'm going to start with this Lakme Lumi cream today. So ये बहुत अच्छा लूमी क्रीम है, आपको एक ग्लो भी प्रोवाइड करता है, स्किन को हाइड्रेट भी करता है. सो आई एम गोना अप्लाई इट राइट नाउ. गाइज, विंटर की वजह से ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है. सो मॉइस्चराइजिंग एंड प्रेपिंग योर स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड ना, दे जस्ट वर्क सो ब्यूटीफुली फॉर माई स्किन. एंड ये सारे जो पिंपल्स थे ना, वो भी अभी कम होने लगे हैं, वरना वो पहले बहुत ज़्यादा बड़े थे. सो शी इज़ यूजिंग अ कंसीलर राइट नाउ. सो आई एम गोना डू द सेम. So I'm going to use this concealer, which is this Wet n Wild Photo Focus concealer, and you guys already know how much I love this concealer. I think I am done with blending my concealer, you can see. So then she picked up one foundation, and Nykaa की Skin Genius foundation तो मेरे पास नहीं है, but I have this foundation which is Nykaa's All Day Matte Foundation. So she applied the foundation only under the eyes like this, and मेरा इतना सा foundation बच गया, which I'm going to remove. Alright, so next I'm going to blend this out, okay? I feel I'm liking this because
मैं ऐसी ट्राई नहीं की थी कभी भी बिफोर। लाइक मैं हमेशा जब भी कंसीलर लगाती थी ओनली अंडर माई आईज लगाती थी, एंड जब मैं फाउंडेशन लगाती थी तो होल फेस में लगाती थी। ओके सो लेकिन ये वाली ट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों को अपने अंडर आईज पे ही लगाना है, विच आई फील इट्स लुकिंग क्वाइट बेटर। गाइस ब्लेंडिंग इज द की, यू हैव टू ब्लेंड एवरीथिंग वेरी नाइसली, एंड फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। Guys, next she hasn't set her under eyes, I can see, and she's directly doing her brows, so I'm gonna do the same. I am gonna use this Swiss Beauty brow pencil. I don't have the Nika brow pencil right now. मेरे पास था वो लेकिन ख़त्म हो गया था। वो बहुत अच्छा eyebrow pencil है, and I will link it down in the description box below. Guys, she love to do her brows, and I also love to do my brows, you guys know. So guys, I'm done with my brows, and I think they are looking quite good. So next, let's see what she's doing. And next he is taking one eyeshadow palette from Nika, and I'm also doing the same, but this is not the exact eyeshadow palette that she took. This is the Nika Eyes on Me 10-in-1 eyeshadow palette, and it is a very pretty eyeshadow palette. You guys already know I have used it so many times on my videos. So she is using a brown shade on the crease and the lower lash line, and I'm going to do the same. And I think I should pick this shade. So I'm going to apply it on my crease. Again, I'm repeating, it's her everyday makeup that I'm recreating, so it's gonna be very simple and easy. And actually I like the way she did her makeup, so then I thought let's just recreate this tutorial. It's looking quite pretty, and I'm liking my eyes today. It's very simple by the way. Next is using one shimmery shade, and वो अपने outer V पे लगा रही है, which is not very chalky. Okay guys, so you can see I have done the same thing. I think it's looking quite nice. As next is taking one kajal pencil and applying directly on the lash line very tightly. I'm gonna do the same. Okay, so next I'm gonna take the same brush like this one, and I'm gonna smoke it out. Okay guys, so next is using a lot of blush, and I'm gonna do the same because I love to use blushes. So for that I'm using this blush. This is the Elf Cosmetic blush. ये बहुत अच्छा blush है, बहुत peachy tone blush है, and she is also using somewhere peachy and coralish blush. आई थिंक आईज आर लुकिंग वेरी नाइस, एंड मैं इस तरीके के लुक को ना बहुत कैरी करती हूँ अपने डे टू डे बेसिस पे भी, बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी येट सो सिंपल, नॉट सो लाइक ड्रामेटिक. सो नेक्स्ट इज यूजिंग हाईलाइटर, एंड सी लव टू यूज हाईलाइटर अ लॉट, सो आई एम गोइंग टू डू द सेम बिकॉज मैं उतना हाईलाइटर नहीं लगाती हूँ, बट फॉर द वीडियो आई एम गोइंग टू अप्लाई द हाईलाइटर बिकॉज सी लव टू यूज द हाईलाइटर सो मच. So I'm gonna take this brush, and मैं ये वाली highlighter लगा रही हूँ, which is from Nika as well. So this is called the Good Old Gold highlighter by Nika, which is a very pretty highlighter. So I'm gonna apply it using this brush. So next is using one lip liner. So today I'm going to use this NYB lip liner. I think it's gonna match her shade. So let me apply this. It's a nude shade, clearly you can see. Next is using a very nice nude shade. I'm gonna use this Mama Earth lipstick, and this is in the shade 01 Caramel Nude. Okay guys, so I'm done with the makeup, and this is what she did to achieve this beautiful natural makeup look, and this is her go-to look guys. So I think ये look बहुत वेरिएबल है, आप इसको आराम से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप डे टू डे बेसिस में चाहो तब भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट नीड सो मच ऑफ टाइम टू डू दिस मेकअप. आराम से आप 10 मिनट के अंदर ये मेकअप को अचीव कर सकते हो, एंड आई फील ये मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड नेचुरल एज वेल. सो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की भी यूज़ नहीं है. फाउंडेशन मैं अपने पूरे स्किन पे अप्लाई
अप्लाई नहीं की थी, स्टिल माई स्किन इज लुकिंग वेरी नाइस। अभी भी ये पिंपल एंड एक्ने मार्क दिख रहा है, बट दैट इज ओके फॉर मी। अगर आपको नहीं पसंद है देन आप डेफिनेटली कंसील कर सकते हो। सो ओवरऑली आई लाइक द मेकअप एंड बिकॉज इट्स अ गो टू लुक एंड आई फील ये बहुत अच्छा लग रहा है। या अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी इंटरटेन हुए हो इस वीडियो से, देन नो फॉर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो व्हाट अदर काइंड ऑफ अ वीडियो यू वांट मी टू मेक एंड आपको कौन कौन से सेलिब्रिटी की मेकअप ट्यूटोरियल रिक्रिएशन देखना है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे भी मैं इंजॉय कर रही हूँ ये करना आजकल, सो आप मुझे बताओगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आऊंगी वो वीडियो। एंड ऑल्सो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनको चेक कर लेना। गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।